हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। ये न्यू ईयर की शुरुआत है। मतलब अभी मैंने सफाई की थी और ये सलीना ने दोबारा से जो है ना वो वहट डाल दिया मेरे कमरे में। खैर अभी हम लोग खाना खाने के लिए जाएंगे, तो खाने के लिए जो है मुझे ऑब्वियसली रेडी होना है। ये मेरी हालत है, बुरे हाल हुए पड़े हैं, तौबा कसमें। तो अभी देख लें, उसके बाद अभी जादू होगा थोड़ी देर में जब मैं नहा के आऊँगी और मैं तैयार होंगी। तो फैमिली डिनर है, उसके बाद फिर कहीं और भी जाना है, फिर वहाँ जाके न्यू ईयर काउंट डाउन एंड ऑल दैट। और ये पीछे इसका हाल देखें बच्ची का। खैर एनीवेज, आई आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। जब तैयार होंगी उसके बाद दोबारा कहूँगी काउंट डाउन के साथ इंशाल्लाह, बट स्टिल इट्स गोइंग टू बी माई फर्स्ट व्लॉग ऑफ द न्यू ईयर ऑफ दिस ईयर। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे, और आपके दिल की सारी नेक ख्वाहिशात अल्लाह ताला कबूल करे। और ये कार्टून लगे हुए आवाज़ें आ रही, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। एनीवेज, तो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। ऑलराइट जी, टाइम टू गेट रेडी। और शॉवर ले लिया मैंने, बाल डाई करने का टाइम नहीं मिला बाहर। एनीवेज, मैं वैसे भी अपने हेयर कलर चेंज करने का सोच रही हूँ। सारे मुझे लगे हुए थे, व्हाई यू ऑलवेज डाई योर हेयर ब्लैक। मैंने बरगंडी रेडिश टाइप का कुछ सोचा हुआ है। आई डोंट नो, अगर मैं खुद को मोटिवेट कर सकी तो आई डेफिनेटली डू इट इन नेक्स्ट 10 to 15 days. That's what my plan is. This is Dr. Brand hydrating essence. This stuff is so good. ये ग्लो रेसिपी का वाटरमेलन पम्पकिन जूस मॉइस्चराइजर यूज़ करना है इसके ऊपर। लेट इट ड्राई, यू नो, हल्का सा बस हो जाए। इसके यहाँ से पता नहीं क्यों रेड हो रही है। दिस इज़ द बायोसेंस with rose serum type thing. This stuff is really good. So winter mein obviously you need some sort of thing to blend your foundation. मेरा foundation especially nose वाले एरिया से अजीब भी हो जाता है, पता नहीं क्या तकलीफ है इसको। This is the Pro Concealer High Definition by Elegol. ये मैं न्यूयॉर्क से लेके आई थी बिकॉज मुझे ना या अमेज़ोन से मंगवाने पड़ते हैं। अमेज़ोन पे चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती हैं क्योंकि आपको पे करना पड़ता है ना शिपिंग वगैरह, और फिर यू नो ऑब्वियसली ये प्राइस से ज़्यादा एक्सपेंसिव बेच रहे होते हैं लोगों को। और इसको सेट करना है मैंने। सेटिंग पाउडर आप कोई भी यूज़ कर लें, डजंट मैटर। मेरे पास ये एल्फ का पड़ा हुआ, मुझे ख़त्म करना है बिकॉज इट्स टू वाइट, लाइक इट्स टू ब्राइट फॉर मी। पता नहीं मैंने क्यों ले लिया था, ट्राई करने के चक्कर में ले लेती हूँ चीज़, बाद में इस्तेमाल होती नहीं है ठीक से। बट मैंने इसको ख़त्म करके जान छुड़ानी है इससे, या we set it and now we're gonna add some colors. इसमें कुछ पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, मैं कौन से कपड़े पहनूँ। पिंक पहन लेती हूँ, पिंक ही पहन लेती हूँ, क्या करूँ। अच्छा, मेरा बहुत दिल था ये एम्पावर्ड पैलेट यूज़ करने का, बड़ा से लेके रखा हुआ यार। मतलब एक दफ़ा मैंने ट्राई नहीं किया। आई एम सो लाइक लेजी। सोचा कि आज करी, हुई 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 तबाही मची हुई यहाँ पे। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा अच्छा, मुझे वाकई नहीं पता मैंने क्या पहना, पर आई थिंक आई विल गो विद द पिंक, पर्पलिश। आई डोंट नो, मेरा दिल करे कुछ पर्पलिश, लाइक नहीं, नॉट पर्पल, लाइक यू नो पिंकिश टाइप का पहनने का। आई डोंट नो, मेरा ब्लैक पहनने का दिल नहीं कर रहा, विच इज स्ट्रेंज, आई नो। So I'll be using this keep going color. It's like, you know, this color. अल्लाह, मेरा शेड खराब हो गया। मेरा दिल ही नहीं करता ना अपने शेड खराब करने का, मैं क्या करूँ। I'm gonna use this here. निकले आएगा कि ख़त्म भी होगा कभी। Okay. Okay, this is some Lancome brush. Supposed to be like that. Oh, this is gorgeous. Oh my god, I don't want to touch this palette. This is so pretty. I'm gonna use this one. I don't know मैं क्यों use कर रही हूँ. I have no idea. I have no idea कि मैंने क्या पहनना है. But I'm just gonna use this. This Kitty Like Something palette from Too Faced. I'm gonna use a very tiny brush to create that outer corner situation with the black eyeshadow. This looks pretty.
I'll be using this, and this is my favorite actually. This is extra dimension blush sweets for my sweet highlighter. Okay, let's use this Dior luminizer. I bought it recently from my holiday shopping during. I haven't used it. This is the first time. This is the shade. It's really pretty. I love the seed. Let me see. This is what my problem is. जब मैं highlighter use करती ना, then I want to apply like more and more. It smells so luxury. It smells luxury. Oh my god. It is luxury, no doubt, but this smells luxury though. So this is me after mascara and eyeliner. I'm not feeling like applying any eyelashes because it's gonna be like too much for me for tonight. Okay, I'm just gonna apply a lipstick and we are done with the makeup, and I'm gonna fix my hair and I'll just change like maybe in the next 20 minutes. I'm just going upstairs to check if everyone is ready so I can. Oh my god, मेरी बात तोड़नी आज. Okay, lip liner. Okay, lipstick. I'll be applying something pink, and this is Burberry Bobbi Brown. The shade is Rosebud. It's like a moisturizing lipstick because my lips are chapped. Okay. I think I'm gonna change my lipstick color. What do you think? It's shiny. I mean, okay, it's me ready to go. This is my makeup. बाल जो है मैंने वो स्ट्रेट नहीं किए. इयररिंग्स मैंने ये साथ में पेयर किए हैं. मैंने हडसन बे से लिए थे. और दिस इज़ माई ड्रेस. सम पाकिस्तानी shalwar suit, and the dupatta is actually really pretty. I don't know if you can see that. So yeah, that's all for today, and it's not actually all. ये जनाब हम खाने का इंतज़ार करते हुए. You can't wait it. Serena, I'm going to eat the whole food. खाना खाने के बाद हम अपनी आंटी के घर जाएंगे. वहाँ जाके डेजर्ट सर्व होगी और न्यू ईयर काउंट डाउन भी हम लोग वहीं पे करेंगे. तो बस यहाँ से उन्हीं की तरफ से करेंगे. तो यहाँ पे न्यू ईयर के साथ साथ बर्थडे सेलिब्रेशन भी थी मेरी कज़न मतलब नवेद की कज़न की. सो शी इज़ सच अ स्वीट गर्ल. बहुत अच्छी दोस्त है मेरी वो. तो उसके साथ में हमने थोड़ा सा सरप्राइज़ पार्टी रखी हुई थी यहाँ पे. और बस यहाँ पे मेरे व्लॉग के ख़त्म होता है. आप सबको बहुत बहुत नया साल मुबारक. अपना ख्याल रखिएगा, तो याद रखिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. अल्लाह हाफ़िज़.